So hi everyone, welcome to West Mentor. Recently, latest update होची that Russia after Venezuela president that means हमें कहबा जो निकोलास मादुरो को जेतरो किडनैप करके नहीं गले बा कैप्चर करके नहीं गले and since then I would say the geopolitical tension is been rising across and the heat is rising across the world हमें कही परिबा and the latest news is coming out that in the North Atlantic Ocean offshore of that means United States of the America a oil tanker named Bella 1 is been captured and been seized by the US Coast Guard. कौन पे seize करी because that was violating and that was carrying the oil from the Venezuela. As the tank was carrying the oil from the Venezuela, and that's why because of the violation of the sanction which has been imposed by the USA, that is why they have captured the tank, and the tank is flagged, the Russian flagged tank, and that's why the point of debate is here that the tank which is Villa 1 which is been captured by the that USA Coast Guard se ship ta kahar se ship ta Russian flagged boli kuha jauchi, and that means the ship was heading towards the Russia. ये होची point of debate हमें कही परिबा. So major geopolitical flashpoint has emerged, that is the North Atlantic Ocean following the US seizure of the Venezuela oil tanker जोठे कि Russia को जाउची that was carrying the oil to the Russia को नेकी जाउथला. दो Russia से टाइम रे जदि हम कहबा एठी आपण देखि परथे US Coast Guards watching the ship को watch करछन एंड जदियो ऑन बोर्ड करी नाहंती बट ताको एंकर करके सेठी रखिचंती कैप्चर करके जा भी हो energies. That means the incidents involves strategic interest of United States, Russia, China, Venezuela is तो काफी importance issue हमें कही पर geopolitical tension है पर whether the world is moving again towards the Cold War जो Cold War चलथिला हमें कहबा 60s 70s 80s and 90s रे जेतरा end हैला कौन world again moving towards the Cold War, that's also a हमें कही परिबा. And the activities of the done, that means Donald Trump's kotha कहबा is suddenly raising the concerns, and there is also a tensions हमें कहबा across the geopolitical tensions arising. ये काफी हमें कहबा difficult परिस्थिति गोटे हमें कहि परिबा, right? So that's why the episodes highlights the rising militarizations of the global sea route को हमें कहि पर, that means global sea route को जेतले कि capture करूचे I means what? If somebody is there to capture the oil tankers of someone else, that means I would say, and recently that has been proved by capturing this Bella once in the North Atlantic Ocean. Apart from that, the few days ago in the last Saturday, it was also unfortunately the unfortunate event that happens to the Venezuela, that the sitting president has been captured and uplifted from the own soil by the foreign territory in the foreign nation. That's a serious what issue of the that means the security for the any regions for the small countries, and ये काफी बड़ा चैलेंज हम कही परिबा. तेणु करके ये जो शिप को जोटा कैप्चर करछि नॉर्थ अटलांटिक रे ये रशिया रो फ्लैग्ड शिप थिला, एंड रशिया इमीडिएटली मध्य कोन करछि तार न्यूक्लियर सबमरीन्स को पठाइछि जो न्यूक्लियर सबमरीन्स ताकू जगुथिला बा कोठी न कोठी जो ऑयल टैंकर जेत ऑयल नै कि जाउथिला सेतले रशिया रो किछि हम कहबा एस्कॉर्ट करिया पिन तांकर किछि हम कहबा किसी force नथला, there was no backup I would say from the Russia side, and immediately by मतलब reaching the news or by having the news the Russia enforcement पे पठेछि, that means nuclear submarines को पठेछि Russia, and that's why हमें कहबा Atlantic Ocean रे बर्तमान in the North Atlantic Ocean the tension is rising. North Atlantic Ocean is emerging as a flashpoint of the tensions for the global tensions जति हमें कहि परिबा. The episode जोटा highlights the rising militarizations of the global sea route, raises the concerns of the escalation international laws and global stability हम कहि परिबा. Dramatic seizure ये जो आमे रहिबा dramatic seizures in the North Atlantic Ocean जेते ये देखि परथो ये जो शिप देखि परथो आपण जंक लागिला भले देखाउची 2-3 मास 5 वर्ष धरि ये पड़ी थिला आमे कहि परिबा कोठी वेनेजुएला रे, एंड सडनली बहुत सारा ऑयल्स नै कि जेतली आसुची ताको कैप्चर करंती माने राइट. तो काफी इंपोर्टेंस हम कहि परिबा. द यूएस कोस्ट गार्ड को सीज करे वेनेजुएला ऑयल टैंकर जे कि वेनेजुएला रु ऑयल नै कि आसुथला जाको शैडो ऑयल ट्रेड बोली यूएसए कहूची. यूएसए कहबा कथा कि जो ऑयल टैंकर्स रहिची जे कि वेनेजुएला वाटर रु बाहर कि आसुथला, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द रशिया. ये इलीगल ऑयल नै कि जाउची बिकॉज़ इट्स अ सैंक्शन इज बीन इम्पोज्ड बाय यूएसए. तेनु करके ये ऑयल को से नबा कथा नो एथेति पे यूएसए कहबा कथा, एंड दैट्स व्हाई यूएसए ताको कैप्चर करे कारण यूएसए कहूची दिस इज नॉट एक्ट ऑफ वार, दिस इज एनफोर्समेंट. This is what enforcement. Now say sanction को केते जण सपोर्ट करूचे केते जण न करूचे, that's also point of debate हमें कहि परिबा.
whether let's say unilateral sanction जदि आम एमती let's say जमती फॉर एग्जांपल मु कहबी ईरान ऊपर sanction लगेला तो इंडिया से ऑयल नहीं परुनी रशिया ऊपर sanction लगेला इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करने को कमाया पड़ला वेनेजुएला ऊपर sanction लगेला 2020 ठु आम ऑयल आनु ना सो दैट मींस जदि एमती गोटे आम कहबा यूनिलैटरल sanction करी करी जिबे दैट मींस व्हाट विल बी हैपेंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो आवर ऑटोनॉमी द एनर्जी ऑटोनॉमी आवर फॉरेन पॉलिसी विल बी कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स ताले हम दुनिया जो भी कंट्री वेनेजुएला ईरान इराक रशिया टू ऑयल किणुची से किनी पारे दैट मीन्स यू आर सेइंग व्हाट द ऑयल ऑल द ऑयल वुड बी परचेज फ्रॉम द यूएसए टू हमें परचेज करबा खाली राइट तो ये यूएसए चाहूचे कि तो ये काफी टेंशन आम कही पार तेणुक जो सडन मिलिटरी एक्शन हाइलाइटेड द रीजनल एंड द ग्लोबल टेंशन आम कही पार नो रशियल्स किसी नेवल्स बा सेठी किसी प्रेजेंस नथिला अदरवाइज डायरेक्ट मतलब कोलिजन भी हो पारता डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी मध्य हो पारता ये गोटे आम चैलेंजेस कही पार तेणु करके द मूव फॉर्म्ड दैट मीन्स फ्रेम्ड बाय द यूएसए एज ए लॉ एनफोर्समेंट नॉट एक्ट ऑफ वार तो यूएसए कहूँ दिस इज नॉट एक्ट एंड वार नुह दिस इज द एनफोर्समेंट बोली कहूँ तो पुतिन देखा रशिया बर्तमान केमती ने रशिया सैडो प्रेजेंस एंड स्ट्राटेजीज कैलकुलेशंस आम कहीपर कहीं रशिया समस्ते जान कि सबमरीन सब प्रेजेंस थाए जहाँ भी रशिया हैड अर्लियर डिप्लॉयड सबमरीन्स एंड नेवल्स एस्कॉर्ट फॉर द प्रोटेक्शंस किंतु बर्तमान नहीं एंड थैंक गॉड कि देयर वाज नो प्रोटेक्शन अदरवाइज देयर वुड हैव बीन बट द डायरेक्ट कोलिजन बिटवीन द यूएसए एंड रशियंस आम कह नेवल फोर्स को नहीं पारता तेणुक जेहेतु यहाँ को रशिया कहूँ दिस इज द एक्ट ऑफ पायरेसी तो एक्ट ऑफ पायरेसी रशिया तक कहूँ एक्विजिशन ऑफ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल मैरिटाइम्स लॉ को कहूँ कि रशिया कहवा कथा रशिया फ्लैगिंग द टैंक जोटा विदाउट यूएसए कहवा कथा कि जो टैंकर अच्छी प्रोसीजर किसी ना क्लीयरेंस किसी ना सस्पिशियस ऑफ आम कहवा कि सस्पिशियस ट्रेड करुँचे धरा जाए सीन आज ए स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स चैलेंजिंग द यूएसए डोमिनेंस आर द सी आम कहीपर नाउ टैंकर्स दैट इज मोर की पास्टली जोटा आम कहीपर यहाँ टैंकर मोर की जोटा आम देखिपुचे इमेज जहाँ बेला वन बोली आम कहूचे एंड सैंक्शन एंगल जो आम कह तो सैंक्शन एंगल रू जनाऊँ कि जोटा आम कहवा मारिनेरा अर्लियर नोन एज द बेला वन जहाँ आम कहूचे failed to legally that is the load crude oils from the Venezuela तो legally से करी नहीं जो डॉक्यूमेंट्स गुड़ा ता पाखरे नहीं ऑथेंटिक नहीं बा जहाँ भी वगैरह वगैरह कंप्लेन्स से करबा कथा यूएसए कंप्लेन करिछि डिपार्टेड फ्रॉम द वेनेजुएला वाटर विदाउट प्रॉपर कार्गो डॉक्यूमेंटेशन नहीं बोली से कहया कथा कि यूएसए कहया कथा allegedly is a part of sanction oil जोटा कि इवेज करूछि हम कहबा नेटवर्क को दैट्स व्हाई ताकू से माने डिस्टर्ब करंती कैप्चर करंती इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन दैट इज वायलेटिंग द सैंक्शन व्हिच इज imposed by USA Venezuela as the centers of the global stage जति मु कहबी for examples I would say geopolitical strategies जति मु कहबी for say कि recently तमे जति देखिबो कि Venezuela जो political situation change हला पर the scenario change हला पर it's always about now Venezuela in the center of the global stage Venezuela is been backed by Iran China and Russia जति हम कहि परबा and USA तांकर allies माने मथे एठी टाइप डोमिनेंस देखे पे चेष्टा करूची that's the concern हम कहि परबा दैट मीन्स जो काराकास उपर जो प्रकार आम कहवा कि जाइए जो अटैक करके नहीं कि आसले एंड ऑयल कंपनीज बर्तमान सैंक्शन उठी बट यूएसए इज पार्शियली यूएसए बट पार्शियली इज आम कहवा जो सैंक्शन रही है रिमूव करने चेष्टा कर पार्शियली दो नॉट एट होल आम कहीपर सैंक्शन हैव पुश्ड द काराकास टुवर्ड्स द आम कहवा व्हाट दैट इज covert export आम कहीपर रशिया एंड चाइना इनक्रीजिंगली इनवॉल्व्स इन द एनर्जी लॉजिस्टिक्स आम कहीपर कहीं ये रशिया एंड चाइनार बहुत सारा लॉजिस्टिक्स रही आम कहीपर दैट्स आल्सो कंसर्न आम रही यूएसए इंटेंसिफाई द मॉनिटरिंग करवा टैंकर्स मान को लिविंग द वेनेजुएला पोर्ट्स जो मैंने वेनेजुएला पोर्ट्स को छाड़ुची से मॉनिटर करने लगी ऑयल शिपमेंट बिकमिंग फ्लैश पॉइंट आम कह फॉर द ग्लोबल कॉन्फेंट्रेशंस तो जो ग्लोबल कॉन्फेंट्रेशन पे आम कहबा जो ऑयल शिपमेंट्स इज नाउ ए बिग पॉइंट आम कहबा बिकॉज ऑयल एवरीबडी नीड्स द ऑयल बीट रशिया बीट चाइना ऑयल इज द व्हाट इकोनॉमी रन्स थ्रू द ऑयल ना चाइना एंगल को जिते कहबा चाइना सिग्नल्स द पॉसिबल्स नावल डिप्लॉयमेंट्स फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी पे चाइना तार नावल डिप्लॉयमेंट करिवो indicates the resistance to unilateral US maritime actions तो चाइना मध्य निजर डिप्लॉय करबे यूएसए मध्य डिप्लॉय करबे इंडिया मध्य डिप्लॉय करबे now the global sea route is going to be filled of what amicable threats and there would be confrontation ही पारे so raises the what prospects of the three power naval presence in Atlantic Ocean रे तीनटा पावर चाइना भी प्रेजेंस रहिबो रशिया भी रहिबो यूएसए भी रहिबो मार्क एक्सपांशन ऑफ चाइनीज ब्लू वाटर आम कह नावल एम्बिशंस जोटा चाइना को कोठी ना कोठी नहीं कि जीवो अटलांटिक ओशन को चाइना जीवो
कम्प्लेक्सिटी हम ऑलरेडी जो भोलाटाइल सिचुएशन रही जदि चाइना एंड रशिया जदि प्रेजेंट रहा आटलांटिक ओशन रे तो कौटी ना कौटी टेंशन फॉर द रशिया आम सॉरी यूएसए यहाँ ठीक नुह एंड यूएसए जो चाहूँ कि डोमिनेट करे आटलांटिक ओशन रे दैट्स आल्सो गोइंग टू बी काफी डिफिकल्ट रहा रिस्क जदि आम कह एस्कालेशन एंड द ग्लोबल कन्सिक्वेंसेस जदि मुझे कहि इनक्रीज ऑफ एक्सीडेंटल्स आम कह मिलिटरी कन्फ्रंटेशन जदि हो पार एंड हम ये जदि भी आगु को देखा क्लोज नाval मैन्यूवर्स कुड ट्रिगर द रैपिड एस्कालेशन जदि पाखापाखि समस्ते पेट्रोल करेंगे तो सेटा मध्य देखा स्ट्रॉन्ग रेटोरिक रिप्लेसिंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट आटलांटिक ओशन इमर्जिंग द न्यू स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट्स आम कहि परबा द ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी रूट्स फेसेस द ग्रोइंग इनसिक्योरिटी नेक्स्ट आम ऑयल कथा देखुले एनर्जी पावर्स एंड द शैडो ये वाइडर कन्फ्लिक्ट आम कहि परबा शैडो ऑफ वाइडर कन्फ्लिक्ट oil flows that means increasingly treated as our strategic asset आम समस्ते जानचे कि oil is a strategic asset इकोनॉमी पे दरकार sanction जोटा यूएसए करूची यूनिलेटरल sanction जो थरे किछि ना आम कहबा there is no backing of the UNSC there is no backing of the UN nothing else is there तो unilateral sanctions how much that would be justified that is a point of debate as well and how much that would be take by the other players like the players like India China Russia other players like Iran that would be the point of debate द कंट्रोल ऑफ एनर्जी रूट्स जोटा आम कहबा फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को मध्य सेव करता है फॉर एग्जांपल्स वी आर हैविंग जदि आमको के ऑयल दउछु विल हैव डेफिनेटली वी विल ट्राई टू हैव द गुड रिलेशन से कंट्री सहित वेनेजुएला इमर्जिंग एज जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स कहि परिबा में तनको ये काफी इंपोर्टेंस हम कहबा ना कंक्लूजन को आसीबा कंक्लूजन ए टेस्ट फॉर द ग्लोबल ऑर्डर्स एट द सी ये मध्य देखा जाओ ताल जदि सी रे द पावरफुल कंट्री माने कैप्चर करिया पे लागिबो देन व्हाट विल हैपेंस टू द स्मॉलर नेशंस The seizures, the USA जोटा कि बेला वन को सीज करछि reflects the changing norms and maritime powers in the politics highlights the strain on international law and multilateralism. It's at times the test limits of the sanction enforcements on the open sea and the future ability depends on the diplomatic restraint as well. The accident signals a more confrontations global order as well. आगु को हमको देखा जिवो that's why the Atlantic Ocean is going to be militarized. It's a point of debate and जो Cold War type situation थला now we are living in the multipolar world. As a bipolar world was there during the Cold War now it's a multipolar world and there could be a tensions rise happen the intention of the USA is clear and that is going to be confronted in the sea water and air as well. Thank you everyone, keep watching.